गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम एनसीईआरटी की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के टेक्स्ट एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस बिगिन। Arrange the following metals in order in which they displace each other from the solution of their salts. So the metals are aluminium, copper, iron, magnesium and zinc, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है वो उतने स्ट्रॉन्गली अपने से कम नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वाले को डिस्प्लेस कर सकता है उसकी सॉल्यूशन से। सो मैग्नीशियम will displace aluminium, which can displace zinc, zinc can displace iron, iron can displace copper from the solution of their salts. Now we have a list of electrode potential values for potassium, silver, magnesium, chromium. Question is, arrange these metals in increasing order of reducing power. तो जिसकी वैल्यू सबसे कम नेगेटिव है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी। सो सिल्वर की सबसे कम, उससे ज़्यादा मर्करी की, उससे ज़्यादा क्रोमियम की, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम की, उससे ज़्यादा पोटेशियम की। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल्स इन विच द रिएक्शन जिंक प्लस 2 सिल्वर गिव्स zinc ions plus 2 silver takes place. Further show that zinc will give electrons to form silver. Which of the electrode is negatively charged? So anode is negatively charged. Zinc, which has greater tendency to give electrons, will be anode. The carrier of current in the cells will be electrons. And to find out reaction, anode will give electrons, so zinc will give electrons to form zinc ions. Cathode, silver ions will take electrons to form silver. Calculate the standard cell potentials of galvanic cell in which the following reactions take place. Chromium plus cadmium gives chromium ions plus cadmium. So chromium is acting as anode. E naught of cell is E naught of cathode minus E naught of anode. Value for cadmium is 0.40. For chromium it's minus 0.74. So minus minus यहाँ plus हो गया, solve करके आंसर आया plus 0.34 volts. Ferrous ion plus silver ions forming ferric plus silver solid. Ferrous is giving electrons, it's acting as anode. Silver ions are taking electrons, it's acting as cathode. So E naught of cell, cathode minus anode is minus 0.80 minus 0.77, 0.03 volts. Calculate delta G naught and equilibrium constant of the reactions. तो E naught हम calculate कर चुके हैं, ये कैथोड माइनस एनोड करके दोनों रिएक्शंस के लिए। डेल्टा जी नॉट के लिए फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो पहले केस में बिकॉज 2 क्रोमियम आयंस आर गिविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच तो 6 है, तो एन की वैल्यू 6 है। फैराडे इज 96500 कूलम्स इनटू जो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकाला 0.34, सॉल्व करके ये आ रहा है minus 196.86 kilojoules. Then delta G naught is equal minus RT ln K. तो ln K will be delta G naught upon RT. log K हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट जो कि डेल्टा जी होता है अपॉन आर टी, और 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए। सो 2.303 आर टी और एफ की वैल्यू डालकर ये आ जाता है 0.059। तो हमारे पास आ गया लॉग के इज इक्वल टू n 6 into e 0.34 upon 0.059. सो सॉल्व करके आ रहा है log k इज इक्वल टू 34.576 और k एंटी लॉग हो जाएगा, तो 0.576 का एंटी लॉग आ रहा है
3.767 और 34 का एंटीलॉग 10⁻34. This is the answer. Similarly, आयरन के लिए N की वैल्यू है 1. So delta G naught is equal to minus NFE naught minus 1 into 96500 into 0.03. सॉल्व करके आ रहा है ये 2895 जूल्स. डेल्टा जी नॉट किलो जूल्स में हो जाएगा 2.895. नाउ टू कैलकुलेट के हमारे पास है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. डेल्टा जी नॉट है माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. सो ln k will be delta g naught upon rt f e naught upon rt. और ये सब सॉल्व करके 2.303 से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू e 0.03 upon 0.059. So k is equal to log k is equal to 0.50847. k is equal to anti-log of this value 3.225. Write the Nernst equation and EMF of the following cell at 298 Kelvin. Nernst equation is E of cell is equal to E naught of cell minus 0.059 upon n log of anode ions upon cathode ions. So anode ions are magnesium ions and cathode ions are copper ions. इनकी वैल्यूज़ हम डाल सकते हैं. पहले ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेते हैं. कैथोड माइनस एनोड. सो 0.34 माइनस 2.37 सॉल्व करके आया 2.71. सो ई ऑफ सेल हो जाएगा 2.71 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू है 2. लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड आयंस इज 0.001 अपॉन कैथोड आयन 0.0001. सॉल्व करके ये वैल्यू आ रही है 0.0295. तो 2.71 माइनस 0.0295 comes out to be 2.6805. इसी तरह आयरन इंटू फेरस आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस इंटू हाइड्रोजन. ये एनोड ये कैथोड. सो ई नोट ऑफ सेल हो जाएगा कैथोड माइनस एनोड इज 0. हाइड्रोजन 0 है. माइनस 0.44. ये प्लस 0.44 वोल्ट हो गया. Nernst equation is E of cell is E naught of cell minus 0.059 upon N. N की वैल्यू यहाँ 2 है. Log of anode ion ferrous ions and cathode ions hydrogen ions. दोनों की concentration की वैल्यू डाल दी 0.001 और यहाँ स्क्वायर भी आएगा. बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से है. Iron plus 2H plus gives ferrous ions plus H2. तो N की वैल्यू 2 है तो यहाँ हमने 2 डाल दिया. और हाइड्रोजन आयंस के साथ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लगा है तो उसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा. पुटिंग द वैल्यूज एंड सॉल्विंग ये 3 आ रहा है सॉल्व करके. सो आंसर इज 0.44 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू माइनस 3. ये सॉल्व करके 0.0885. इसमें से माइनस करके आंसर आ रहा है 0.5285 वोल्ट्स. नेक्स्ट, टिन इज एनोड एंड हाइड्रोजन इज कैथोड. सो ई नॉट सेल विल बी 0 माइनस 0.14. ये प्लस हो गया 0.14. Nernst equation will be E of cell is E naught of cell minus 0.059 upon N की वैल्यू 2 है इस केस में. और ऊपर टिन आयंस की कंसंट्रेशन और नीचे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर. सॉल्व करके ये आंसर आ रहा है 0.06. इसमें से माइनस करके E of cell will be 0.08 volts. So bromine supported on platinum dipped in bromide ions, hydrogen ions reduced to hydrogen. This is acting as cathode, as anode.
So E naught of cell will be 0 minus 1.08. This comes out to be minus 1.08. Now, Nernst equation says that E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon N is 2 in this case, log concentration of products upon reactants, that is concentration of bromine into hydrogen upon bromide ions square into hydrogen ions square. By convention, the concentration of these elements, bromine and hydrogen, is 1. So equation is reduced to E naught cell is equal to minus 1.08 minus 0.059 upon 2 log of 1 upon concentration of 0.01 the whole square into 0.03 the whole square. On solving, this comes out to be 1.11 into 10 raised to power 7. Taking logs, we get 7.045. Solving this portion, we get minus 0.208. Now, minus 1.08 minus 0.208 is minus 1.288 volts. So, as the E or EMF of cell is negative, the reaction is not feasible, but the reverse reaction can take place, that is hydrogen gas will act as anode and give electrons, and bromine will take electrons. So, in the button cells widely used in watches and other devices, the following reaction takes place. Zinc plus silver oxide and water forms zinc ion plus silver plus hydroxide ion. So that means zinc is acting as anode. Determine the standard free energy change of reaction and E naught for reaction. So E naught for reaction will be E standard EMF of cathode minus that of anode. So silver minus zinc. Zinc is minus 0.76. Silver is plus 0.344. So answer comes out to be 1.10 volt. This is standard EMF of cell. Now delta G naught is minus NF E naught. So N is 2. So delta G naught will be minus 2 into 96500 into 1.104. So this comes out to be minus 213072 coulombs volt, or minus 2.13 into 10 raised to power 2 kilojoules. The conductivity of 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. Formula is lambda m is equal to kappa into 1000 upon C. So 0.0248 into 1000 upon 0.20 comes out to be 125 Siemens centimeter square mole inverse. The resistance of a conductivity cell that contains 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohms. What is the cell constant if conductivity of the same solution is at 298 Kelvin is 0.146 into 10 raised to power minus 3 Siemens centimeter inverse. So we know that cell constant is conductivity upon conductance. Conductance we can find out from resistance. 1 upon 1500 will give us conductance. So conductivity is given as 0.146 into 10 raised to power minus 3. And divided by 1 multiplied by 1500 comes out to be 0.219 centimeter inverse. The conductivity of sodium chloride at 298 Kelvin has been determined at different concentrations
and the results are given below. So concentration 0.001 mole and conductivity into 10 raised to power 2 Siemens meter inverse is 1.237 and so on. Calculate lambda m for all concentrations and draw a plot between lambda m and c raised to power 1 by 2. Find the value of lambda naught m. So lambda m is equal to kappa into 1000 upon m. So kappa is 1.237 into 10 raised to power 2 Siemens per meter, or per centimeter it will be 1.237 into 10 raised to power minus 4 Siemens centimeter inverse. So molar conductivity will be 1.237 into 10 raised to power minus 4 upon concentration 0.001 into, this comes out to be 123.7 Siemens per centimeter square per mole inverse. Then at 0.010 molar concentration, the value is 11.85 into 10 raised to power 2 Siemens per meter. In centimeters it will be 11.85 into 10 raised to power minus 4, and lambda m 11.85 into 10 raised to power minus 4 upon 0.010, which is 118.5 Siemens centimeter square per mole. At 0.020, the value will be, when we divide conductivity by concentration, 115.83 Siemens centimeter square mole inverse. At 0.050, we get 111.1, and at 0.100, we get lambda m is equal to 106.74 into 10 raised to power minus 4 upon 0.100 is equal to 106.7 Siemens centimeter square per mole. Similarly, we can calculate the under root of all the concentrations. So under root of 0.001 concentration will be under root of 1 upon 1000, that is 0.032. Similarly, under root of 0.010 is 0.10, under root of 0.020 is 0.14, it is 0.223, for 0.100 it is 0.32. Plotting the graph on this y-axis we keep molar conductivity, on x-axis we keep square root of concentration. 0.32, the value is 123.7, for 0.10 it is 118.5, for 0.14 it is 115.8, for 0.22 it is 111.1, and for So this is the graph between lambda m and square root of concentration, and if we extrapolate this graph to the y-axis, we get the value of lambda naught m, which is 124.5. तो lambda naught m भी हमने निकाल लिया. Next, conductivity of 0.0241 molar acetic acid is 7.896 into 10 raised to power minus 5 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity, and if lambda naught m for acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square per mole, what is its dissociation constant? So formula is lambda naught m is equal to kappa into 1000 upon molarity. Kappa is given as 7.896 into 10 raised to power minus 5, and molarity is 0.00241. So lambda naught m is 32.76. See, degree of dissociation alpha is molar conductivity at concentration C upon molar conductivity at infinite dilution. So molar conductivity at concentration C is 32.76. We have just calculated, or
लैम्डा नॉट m हमको दिया हुआ है 390.5, तो डिवाइड करने पे आंसर आ गया 8.39 इंटू 10⁻²। तो अगर ये रिएक्शन है एसिटिक एसिड डिकम्पोज करके एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन्स दे रहा है, तो 0 कंसंट्रेशन पे अगर C मोल्स हैं तो एट इक्विलिब्रियम उसमें से अल्फा 1 में से डिसोसिएट कर गए, तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन रहेगी C इंटू 1 माइनस अल्फा, एसीटेट आयन C अल्फा और हाइड्रोजन आयन C अल्फा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। तो ये आ गया C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, जिसमें से C कैंसिल आउट हो गया और ये रह गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C की वैल्यू है 0.00241 और अल्फा की हमने निकाली 8.39 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 8.39 इंटू 10⁻²। सॉल्व करके आंसर आता है कि A इक्वल टू 1.86 इंटू 10⁻⁵। How much charge is required for the following reduction? 1 mole of aluminium ions to aluminium. तो एल्यूमिनियम आयंस को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। चार्ज कैरिड आउट बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे, तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 3 फैराडे। इसी तरह 1 मोल ऑफ कॉपर आयन को कॉपर में करने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 फैराडे इज द चार्ज रिक्वायर्ड। अब 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव 2 Mn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की हो जाएगी, इसको हम x मान लें, तो x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7। तो +7 को जब +2 में चेंज करते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आता है, तो दैट मीन्स चार्ज हमें चाहिए 5 इंटू 96500 कूलम्स और 5 फैराडे इज द चार्ज रिक्वायर्ड। How much electricity in terms of Faraday is required to produce 20 gram of calcium from molten calcium chloride? तो कैल्शियम ऑब्टेन करने के लिए कैल्शियम आयंस को हमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मास होता है 40, तो 40 ग्राम्स कैल्शियम के लिए 2 फैराडे चाहिए, तो 20 ग्राम्स के लिए कितना चाहिए होगा 2/40 इंटू 20, ये आ गया 1 फैराडे। इसी तरह 40 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो 1 मोल एल्यूमिनियम का मास होता है 27 ग्राम, सो 27 ग्राम्स के लिए हमें 3 फैराडे चाहिए, तो 40 ग्राम्स के लिए 3/27 इंटू 40, 4.4 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। How much electricity is required in coulombs for the oxidation of 1 mole of H2O to O2? 2 moles of water will require 4 electrons. So 1 mole will require 2 moles of electrons. So charge required will be 2 Faraday. In coulombs it will be 2 into 96500 coulombs. This is 1.93 into 10⁵ coulombs. Similarly, for FeO into Fe2O3, Fe in +2 oxidation changes to Fe in +3, that is 1 mole of electron is required. 1 Faraday means in coulombs it will be 1 into 96500 coulombs. So this is the answer. A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 amperes for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ निकल नाइट्रेट में पहले करंट डालने पर निकल नाइट्रेट डिकम्पोज करता है इनटू निकल आयंस एंड नाइट्रेट आयंस। देन निकल आयंस विल टेक 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड टू फॉर्म निकल। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम निकाल सकते हैं Q इज इक्वल टू I इंटू टी, करंट है 5 एम्पियर्स, टाइम है 20 मिनट्स, सो तो 5 इंटू 20 इंटू 60 is 6000 कूलम्स। तो अगर 1 मोल निकल डिपॉजिट करना हो तो 2 फैराडे यानी 2 इंटू 96500 कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो 2 मोल्स ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 × 96500 कूलम्स ऑफ करंट से हमारा निकल प्रोड्यूस होगा, 1 मोल होता है 58.5 ग्राम्स के बराबर। तो इतने से इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो 6000 से प्रोड्यूस होगा 58.5 अपॉन 2 × 96500 इंटू 6000। ये सॉल्व करके आंसर आता है 1.8258 grams. 3 electrolytic cells A, B, C containing solution zinc sulfate, silver nitrate, copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 grams of silver is deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow and what mass of copper and zinc were deposited? तो सेल बी में सिल्वर नाइट्रेट है तो सेल बी में रिएक्शन होगा. Silver nitrate will decompose into silver ions and nitrate ions. 1 मोल सिल्वर आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है to form silver. So that means कि सिल्वर का एटॉमिक मास 108 ग्राम्स सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट इज 96500 कूलम्स. इतने ग्राम्स के लिए इतना चार्ज चाहिए तो 1.45 ग्राम्स के लिए चाहिए होगा 96500 upon 108 into 1.45. ये आ गया 1295.6 कूलम्स. चार्ज इक्वल टू I इंटू टी. I है 1.5 एम्पियर. चार्ज हमने निकाल लिया, टाइम निकल आएगा. दिस इज 863 seconds. So weight of copper and zinc can be calculated by using Faraday's second law of electrolysis. For zinc ions will take 2 moles of electron. So that means 2 into 96500 coulombs will produce current 1 mole, 65.3 grams of zinc, and 1295.6 coulombs will produce 65.3 upon 2 into 96500 into 1295.6, which is 0.438 grams. Similarly, in cell C, 2 moles of electrons are required. So 2 into 96500 coulombs will produce copper 63.5. 1295.6 will produce 63.5 upon 2 into 96500 into 1295.6. Solve करके आता है 0.426 grams. Using the standard electrode potentials given in table 3.1, predict if the reaction between the following is feasible. तो ferric ions and iodide ions E0 निकाल लेंगे, अगर वो पॉजिटिव आया तो feasible है. So ferric ions plus iodide ion will give ferrous ions plus half iodine. E0 of cell will be cathode minus anode. So ये ion is acting as cathode क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके ferrous बना रहा है. So आयन की वैल्यू है प्लस 0.77, आयोडीन इंटू आयोडाइड की वैल्यू है 0.541, कैथोड माइनस एनोड वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और वैल्यू होगी 0.23 वोल्ट्स. सिल्वर आयन्स प्लस कॉपर, सिल्वर आयन इंटू सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.80, कॉपर आयन इंटू कॉपर का 0.34. और अगर रिएक्शन है कि कॉपर सिल्वर आयंस के साथ रिएक्ट करके कॉपर आयंस और सिल्वर बना रहा है तो दिस इज एक्टिंग एज कैथोड. सो कैथोड माइनस एनोड 0.80 माइनस 0.34, 0.46 पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज फिजिबल. सो नेक्स्ट इज फेरिक ions and bromide. Ferric ions and bromide will form ferrous ion and bromine. तो रिडक्शन फेरिक आयंस की हो रही है तो ये कैथोड है. तो कैथोड माइनस एनोड 0.77 माइनस 1.09 इज माइनस 0.32. क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल. सिल्वर प्लस फेरिक आयंस फॉर्म्स फेरस आयन प्लस silver. Silver is acting as anode and ferric ion as cathode. So cathode 0.77 minus 0.80 minus 0.03. Negative value आ रही है, reaction is not feasible. Bromine and ferrous ion. So bromine plus ferrous ion will form bromide ion plus ferric ions. So
यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये एनोड है, तो कैथोड 1.09 माइनस 0.77 प्लस 0.32 वोल्ट रिएक्शन इज feasible. Predict the products of electrolysis in each of the following. An aqueous solution of silver nitrate with silver electrodes. So silver nitrate decomposes to give silver and nitrate ions. At anode, silver will give electrons to form silver ion. At cathode, silver ion will take electrons to form silver. So an aqueous solution of silver nitrate. Aqueous solution of silver nitrate with platinum electrodes में at cathode सिल्वर आयंस इलेक्ट्रॉन लेंगे और सिल्वर बनाएंगे, लेकिन एट एनोड हाइड्रोक्साइड आयंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो कम होगा, तो दे विल lose electrons to form oxygen. Dilute solution of sulfuric acid with platinum electrodes. Sulfuric acid ionizes as H plus ions and sulfate ions. Water ionizes as H plus and OH negative ions. At cathode, hydrogen ions will take electrons to form hydrogen gas. At anode, दोनों में से हाइड्रोक्साइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देगा और ऑक्सीजन गैस बनाएगा. Electrolysis of aqueous copper chloride with platinum electrode will involve the following process. Copper chloride will decompose to give copper and chloride ions. Water will decompose to give H plus and OH negative ions. At cathode, copper ions will take electron to form copper solid. At anode, chloride ions will give electrons to form chlorine gas. So chlorine is produced. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.